तो कमेंट किया कि Assalamu alaikum. My dear students, my name is Dr. Aruj and I am Assistant Professor Microbiology. And as you know, we are now discussing the journal Microbiology. And today we will discuss a very easy topic, you can say, a very interesting and a very easy topic, which is normal flora. Are you people attentive? Is everyone here? Yes. Yes, ma'am. Okay, beta. So what is normal flora? Normal flora is the term we use to describe the various bacteria and fungi that are permanent residents of certain body sites. I hope you are familiar with the terms bacteria and fungi. I think you know about bacteria and fungi. Am I right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Normal flora is the term used to describe the various bacteria and fungi that are permanent residents of your certain body sites. So they reside on your body. They reside on the certain sites of your body and they live there. Okay. They inhabit the body surfaces that are exposed to the environment, such as skin, oropharynx, intestinal tract, and vagina. So they are mostly present on those body surfaces that are exposed to the environment, which are skin, oropharynx, intestinal tract, and vagina. As you know, the skin is exposed to the environment. Oropharynx is also exposed to the environment. We inhale air. Our nose or oropharynx is exposed to the environment. Even the respiratory tract. The intestinal tract is also exposed to the environment and vagina as well. So most, yes, Paika, do you have any question, beta? मैम आप प्लीज सबको म्यूट कर दें, पीछे से बहुत डिस्टॉर्शन आ रही Okay, just wait a minute. तो कह रही म्यूट कर दूं बच्चे कह रहे हैं बाकी बच्चों को म्यूट कर दें, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है. My dear students, it is not possible for me to mute all the participants. Kindly, आप सब बच्चे जो हैं आप लोगों को पता है कि you are in the classroom now, so please follow the classroom rules. Please, I request all of you. You must be in the separate room so that others can listen properly. Thank you. The normal flora, as I told you that the normal flora is the term used to describe the various residents of the certain body sites. So normal flora actually kya hai? Some of the bacteria and fungi that are present on your certain body surfaces and that are the permanent residents. Residents kaun hote hain? Residents are the people that live in the particular area. So bacteria and fungi that are the permanent residents of the certain body sites are called normal flora. They inhabit the body surfaces that are exposed to environment. As I told you that they are present mostly on those body surfaces that are exposed to the environment. As you know that the skin is exposed to environment, our throat, our nose, our oropharynx is exposed to environment because we inhale air. In our intestinal tract is also exposed to environment.
and vagina is also exposed to environment. So they are mostly present on those sites that are exposed to environment. What is the behavior of normal flora? They are mostly the low virulence organisms. Have you ever heard the term virulence? Have you ever heard the term virulence? Yes, ma'am. What is virulence? Do you have any idea? Do you have any idea? मैम उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट? You can say anyone else? Ma'am, the severity of something. Severity of something. Anyone else? The potential of the organism to harm others. Ma'am, any disease causing organism Yes. like? You can say virulence is actually the ability of an organism to cause certain disease or to cause any pathogenesis, right? जितनी विरुलेंस होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की उतनी ही ज्यादा उसकी एबिलिटी होगी कि वो डिजीज कॉज कर सकता है, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है? सो विरुलेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज disease or to cause signs and symptoms or to cause infection. In their usual anatomic sites, they are mostly non-pathogenic. So there are certain bacteria that reside in the nose. Some of them are the residents of skin. Some of them are residents of the GI tract. Some of them are the residents of the genitourinary tract. So if an organism is the part of the normal flora of nose, it will be non-pathogenic at that site. But it doesn't mean that it is non-pathogenic. Likewise, if we talk about an organism which is called Streptococcus epidermidis, which is the normal flora of your skin, it is only non-pathogenic at that site. It is only non-pathogenic at the skin, but it doesn't mean that it is a non-pathogenic bacteria. Streptococcus epidermidis is responsible for causing the valvular endocarditis in patients with prosthetic heart valves. So it is pathogenic, but at its site where it is a part of the normal flora, it will be non-pathogenic. If they leave their usual anatomic site, especially in immunocompromised individual, they can cause damage. Viruses and parasites are usually not residents of the human body. So we are talking about bacteria, virus and fungi. Only bacteria and fungi will be the part of the normal flora. Mostly parasites and viruses are not residents of the human body. Do you understand? Normal flora, Yes, ma'am. whenever we talk about the normal flora, we are referring to bacteria and fungi. We're not talking about the viruses and parasites, right? Parasites, do you heard the term parasite? What is parasite? आपने कभी parasites का नाम सुना बेटा? Ma'am, Ma'am, an organism that needs a host to perform its actions and live by living on a host. Yes. ma'am, host And in dependent return, it will harm the host, right? Yes, ma'am. In return, it will not be beneficial for the host. It will harm the host, right? So viruses and parasite and viruses क्या होता है बेटा? Viruses बहुत आप widely use देख रहे हो term, हम बहुत use करते हैं. Viruses are also an intracellular parasites. Okay, they are not parasites, but हम उन्हें कहते हैं कि they will be present inside the cell and they will harm the host. Okay, so viruses and parasites are not the residents of human body. Only we are talking about the bacteria and fungi. The internal organs are usually sterile and are free of the microorganisms. So as I told you that the normal flora about the normal flora, that
they are mostly present on the exposed surfaces, but the internal organs will be sterile and free of all the organisms. Like the central nervous system, there is no normal flora of the central nervous system. Blood का कोई normal flora नहीं है. The lower bronchi and alveoli has no normal flora. Liver, spleen, kidneys, and urinary bladder, they are free from all the microorganisms. They have no normal flora. Okay, the internal organs are sterile and they are free of the microorganisms. So normal flora will be present on those sites that are exposed to the environment. The members of the normal flora vary in both number and kind from one site to another. Excuse me. So this is the chart which is present is also in your books. Skin. The normal flora of the skin is Staphylococcus epidermidis. It is the most important organism. Okay. Skin has other organisms as well, but the most important is Staphylococcus epidermidis. The least important organisms are Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheria, various streptococci, Pseudomonas, and yeast. अभी आप लोगों को बच्चे ये टर्म जो है वो बहुत डिफिकल्ट लग रही होंगी, but इंशाल्लाह ताला when we will start the bacteriology, you will be familiar with each and every organism, and then you will not find any difficulty. So the normal flora of skin is Staphylococcus epidermidis. The normal flora of nose is Staphylococcus aureus, and the least important organisms are Staphylococcus epidermidis and Corynebacterium. Are you people listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चों ये जो important organisms है ना, इनको आपने जरूर याद करना है. They are important. जैसे कि whenever I will ask you the normal flora of skin, you will answer that it is Staphylococcus epidermidis, and the normal flora of nose is Staphylococcus aureus. Likewise, the normal flora of mouth is Viridin streptococci, and in the dental plaque, the Streptococcus putans is present, and gingival, in gingival areas, there are various anaerobes, bacteroides, Fusobacterium, streptococci, and actinomyces. And in the throat, there is also a Viridin streptococci, and in colon, there are many organisms, but the most important are Bacteroides fragilis and E. coli or Escherichia coli. And in vagina, the very important organism is Lactobacillus. Lactobacillus is a part of the normal flora of the vagina, and it keeps the pH low. And E. coli is also a very important part, and the group B streptococci. As I told you that these terms, maybe you will find these terms difficult now, but inshallah ta'ala, when we will start the special bacteriology, you will be familiar with each and every organism. So let's revise. The normal flora of the skin is Staphylococcus epidermidis. The most important organism is Staphylococcus epidermidis. In the nose, it is Staphylococcus aureus. In the mouth, it is Viridin streptococci. And the dental plaque, there will be Streptococcus mutans. Likewise, all those sites. ये आपको बेटा important organisms याद होने चाहिए. They should be on your tips. Now, what is the carrier state? अभी जैसे कोरोना है तो हम ये बहुत frequently use कर रहे हैं term the carrier state, that a person may be a carrier. Do you know? Yes, ma'am. Okay. The term carrier implies that an individual harbors a potential pathogen. So carrier का क्या मतलब है कि कोई भी individual है, it harbors a potential pathogen, means it has the pathogen. The individual may be mostly will be asymptomatic, and it can be a source of infection for the others. Frequently used in reference to a person with an asymptomatic or to someone who has recovered from the disease but continues to carry the organism and shed it for the longer period. So the carrier state mostly implies to an individual who has an asymptomatic infection or
may be recovered from a disease, but the individual continues to carry the organism and shed it for the longer period of time, and it will be a source of infection for the others. वो खुद तो asymptomatic हो गया है या वो खुद recover हो गया है, लेकिन he or she is responsible for causing infection, or he or she is the source of infection for the others. अब समझ आ रही है बेटा आपको what is the carrier state? Yes, ma'am. Carrier state क्या है? ma'am. एक इंडिविजुअल जो है इधर उसको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है या वो रिकवर कर चुका है, लेकिन अभी उसके अंदर वो पैथोजन मौजूद है एंड ही और शी इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर्स. मैम यस बेटा. मैम वो उस इंडिविजुअल की बॉडी में क्यों नहीं कॉज करती पैथोजेनिक? बेटा नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ, ये नहीं है कि उसकी बॉडी में वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा. बात मैं ये कर रही हूँ कि एक इंडिविजुअल है, उसकी बॉडी में वो पैथोजन मौजूद है, या तो वो इंडिविजुअल एसिम्प्टोमेटिक है. हम मोस्टली यूज करते हैं कैरियर स्टेट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए, एसिम्प्टोमेटिक पर्सन के लिए, कि उसने वो उसके अंदर तो वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है और उसने माइल्ड से इन्फेक्शन की है और वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, लेकिन वो दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है. मतलब कि आजकल आपको पता है कि कोरोना में बहुत ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन दे आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स, राइट? Yes, ma'am. This is the one scenario. The second one is he or she may be recovered from the disease. मतलब उसको डिजीज हो चुकी है, उस ऑर्गेनिज्म ने उस इंडिविजुअल में साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो कॉज किए हैं, बट he recovered now, but he or she is continuously carrying the organism and shedding it, राइट? एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल उसको अगर कोरोना वायरस हुआ है, वो खुद तो उससे रिकवर कर गया है, बट ही इज कंटिन्यूअसली शेडिंग द वायरस, सो ही और शी विल बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, दिस इज द जब रिकवर कर गया तो फिर कैसे? यस, जब रिकवर कर गया है तो फिर कैसे रिकवर वो कर गया है. स्प्रेड रिकवर कर? करने का मतलब ये है कि उसके साइन सिम्टम्स जो है वो खत्म हो गए हैं. ठीक है मैम इट्स मीन कि वो बैक्टीरिया डोरमेंट हो जाएगा, वो बाद में इंफेक्शन कॉज नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरों में कॉज कर सकता है अगर किसी और बॉडी में जाएगा. मैं आपको कह रही हूँ लाइकवाइज जैसे हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो हम आपने सुना होगा इसके बारे में कि हेपेटाइटिस जो है वो अंदर जाके बैठ जाता है लिवर में, वो वहां पे रहता है. ठीक है, यस मैम. अगर एक्यूट फेज जो है वो उससे रिकवर हो जाता है पेशेंट, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली उसको शेड करता रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये नहीं है कि फॉर एवर वो शेड करेगा, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, राइट? ओके मैम. लाइक इन द हर्पीज वायरस, फॉर एग्जांपल अगर आप मीजल्स की एग्जांपल लेते हैं तो एक एसिम्प्टोमेटिक फेज है ना मीजल्स में. यस. मीजल्स का पता है ना बेटा आपको? मीजल्स में क्या होता है कि यस पेशेंट मैम. को जब कोई मीजल्स या चिकन पॉक्स अगर आप ले लें, हर्पीज वायरस फैमिली से ही हैं दोनों, तो उसमें बेटा क्या है कि मीजल्स या चिकन पॉक्स में एक एसिम्प्टोमेटिक फेज आती है. ठीक है, कि पहले पेशेंट को सिर्फ थोड़ा सा मलेरिया है, उसको अभी जो है रैश डेवलप नहीं हुआ, बट उस टाइम पे पेशेंट जो है ही और शी शेड्स द वायरस. ठीक है, वो इन्फेक्टिव है उस टाइम पे, उसके आफ्टर सम टाइम जो है वो फीवर डेवलप होता है, रैश डेवलप होता है. ठीक है ना? और उसके बाद ये भी आपको पता है कि रैश के बाद हम कहते हैं कि जब तक जो रैश है वो क्रस्ट नहीं कर जाता, तब तक पेशेंट जो है वो उस वायरस को शेड करते रहते हैं. ठीक है, तो ये है कि वो सिम्टम लेस भी हो जाते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे शेड द बैक्टीरिया और द वायरसेस. ठीक है, ये एक मतलब है कैरियर स्टेट का. Either he or she will be asymptomatic or he or she is recovered from the disease but continues to carry the organism and shed it for a longer period. The examples are the hepatitis C virus and the herpes virus. Difference between the normal flora and the colonization. Normal flora और colonization में difference क्या है? What is the normal flora? As I told you, the normal flora is a permanent resident of the certain sites. The term colonization typically refers to an acquisition of a new organism. Normal flora क्या है? जैसे मैंने आपको स्किन का बताया, the normal flora of skin is Staphylococcus epidermidis. Yes, Anam.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही, कट कट के आ रही है। बेटा आपको सिर्फ अनम इशू हो रहा है या बाकी बच्चों को भी हो रहा है? नहीं मैम, सच में कट कट के आ रही है। रही है। Okay. What is the difference between the normal flora and the colonization? Normal flora means the permanent residents जो वहां पे रहते हैं, ठीक है, जो वहां के रिहायशी हैं। जैसे आप कह लो कि likewise कि bacteria, certain bacteria are the normal flora or the permanent residents of the body. But when we use the term colonization, it typically refers to an acquisition of a new organism. The organism that is not the permanent resident, but it is different from the permanent resident. So we use the term colonization to refer to those organisms that are new at that site. It may cause an infectious disease or it may be eliminated by a host defense. Like अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उस साइट पे, उसमें कॉलोनाइजेशन इज एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन और द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड देन द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एट दैट साइट, एंड it may cause the disease or your immunity will play a role and it will eliminate that organism. The person colonized by a new organism can transmit the organism to another, like act as a reservoir of infection for the others. So the person that is colonized by a new organism can transmit it to other as well. So why normal flora are important, what is the role of the normal flora? The members of the normal flora play an important role in the maintenance of the health and in the possession of the disease in the three significant ways. We'll discuss in detail. They can cause disease, especially in the immunocompromised and debilitated individuals. They are non-pathogenic in the usual anatomic location, but they can be pathogens in the other parts of the body. As I told you, the sites on which they reside, they are non-pathogenic on those sites only, but they can be pathogenic in the other sites. As I told you that the Staphylococcus epidermidis, which is a part of the normal flora of your skin, it is non-pathogenic only on the skin, but when it will enter an other site or when it will enter your other body part, it will be pathogenic. Like I told you that it is responsible for causing endocarditis in patient with prosthetic heart valves. Okay, so it is only pathogenic. It is only non-pathogenic in their usual anatomic locations, but it will be pathogenic in the other parts of your body. So the number 2 is they constitute a protective host defense mechanism. The non-pathogenic resident bacteria occupy attachment sites on the skin and mucosa that can interfere with the colonization by the pathogenic bacteria. The ability of the members of the normal flora to limit the growth of pathogens is called the colonization resistance. So how they constitute a protective host defense mechanism, how they protect you, mostly the non-pathogenic resident bacteria occupy the attachment sites. आपको पता है बेटा आपके स्किन पे सर्टेन अटैचमेंट साइट्स होंगी, नोज पे होंगी, म्यूकोजा में होंगी, सो दे एक्चुअली ऑक्युपाई दोज साइट्स, and whenever they occupy those sites, they will interfere with the colonization by the pathogenic bacteria. For example, अगर किसी भी जगह पे अगर 10 resident sites हैं, तो वो सारी की सारी अगर आपके अपने नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरियाज ने ऑक्युपाई की हुई है, तो वहां पे जो बाहर से पैथोजन आएगा उसे जगह ही नहीं मिलेगी कि मैं यहाँ पे कहाँ जाके बैठ जाऊं, यहाँ तो ऑलरेडी इतने बैक्टीरियाज मौजूद हैं. सो दे इंटरफेयर विद द अटैचमेंट साइट्स एंड इन दिस वे दे प्रोटेक्ट अस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लासरूम में एंटर होते हो और आप देखते हो कि सारी की सारी जो सीट्स हैं दे आर फिल्ड, सो क्या होगा, आप क्लासरूम से बाहर चले जाओगे कि नो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मुझे कहीं और चले जाना चाहिए. सो दिस इज हाउ दे प्रोटेक्ट अस.
They occupy all the attachment sites of the skin and mucosa and interfere with the colonization by the pathogenic bacteria. As I told you, what is colonization? Colonization क्या है? Colonization is the new organism. New organism. शाबाश. Colonization is the entry of a new organism. फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्ड ईयर की क्लास में ले रही हूँ, फोर्थ ईयर का कोई बच्चा आएगा, वो कहेगा यहाँ तो सारी थर्ड ईयर की क्लास बैठी हुई है, मेरे पास तो कोई जगह नहीं, ना कोई सीट है यहाँ पे, मैं तो चला जाता हूँ बाहर, मेरी तो क्लास कहीं और हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल फ्लोरा जो है वो आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपको प्रोटेक्ट करता है बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बिकॉज दे ऑक्युपाई द अटैचमेंट साइट्स. सो दिस इज कॉल्ड द colonization resistance. Colonization resistance. The ability of the members of the normal flora to limit the growth of the pathogens or the new organisms is called the colonization resistance. समझ आई? Yes, ma'am. Okay. What is if the normal flora is suppressed, the pathogens may grow and cause disease. If the normal flora of it will be suppressed. Suppressed का क्या मतलब है कि कम होगा या किसी भी वजह से कम हो गया. The pathogens may grow. The new organisms may grow there and they will cause disease. For example, antibiotics can reduce the normal colonic flora that allows the Clostridium difficile, which is resistant to antibiotics, to overgrow and cause the pseudomembranous colitis. ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर हमारा नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाता है तो बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं. लाइक इफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ योर GI tract or the gastrointestinal tract will be suppressed by the use of extensive antibiotics like we use in the hospitals. इसीलिए हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स को बहुत रैशनली नहीं यूज करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, बिकॉज दे विल इनहिबिट द नॉर्मल फ्लोरा. और नॉर्मल फ्लोरा तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना. So when we use the extensive antibiotics, they will reduce the normal flora of the GI tract and it will allow the Clostridium difficile, which is very resistant to antibiotics, to grow and cause the pseudomembranous colitis. This picture will show you how. ये जो नीचे organisms हैं, ये क्या है? This is the, ये आपके cells जो हैं सेल ट्रैक के, यहाँ पे जो residents हैं यहाँ के, they will protect you from the disease. ठीक है. When the normal gut flora is altered by the broad spectrum antibiotics, most notably clindamycin, cephalosporins, ampicillin, amoxicillin and fluoroquinolones, they will inhibit their growth. अब वो देख रहे हो ना, उनकी growth inhibit हो रही है, वो कह रहे हैं ओहो ये क्या हो रहा है, ये तो हम तो यहाँ पे रहते थे, एंटीबायोटिक्स ने उनको भी खत्म कर दिया, ठीक है, उनको भी स्प्रेस कर दिया. तो क्या होगा? These new organisms will reside there and they will cause disease. Okay. The difficile flourishes within the colon. The Clostridium difficile will flourishes within the colon and it will cause pseudomembranous colitis and the patient will present with abdominal pain, diarrhea, malaise. ठीक है. It is the most common infectious disease caused by the nosocomial it is common infectious cause of the nosocomial diarrhea. Yes beta. मैम ये तब होगा ना जब अगर कोई इंडिविजुअल बिना वजह एंटीबायोटिक्स लिए जा रहा है. ऐसे तो नहीं है कि अगर उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है तो नहीं नहीं होगा. मैं आपको बताती हूँ बेटा. अब क्या होता है कि फिजिशियंस बहुत जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट किसी भी वजह से हॉस्पिटल में, मोस्टली उन पेशेंट्स को होता है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं. मोस्टली क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं केयरफुली एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं किया जा रहा. अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या होता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट तो काम कर रही हैं, बट कुछ बहुत फॉर एग्जांपल अगर फिजिशियन जो है वो 3 to 4 एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर देता है जिसमें सिर्फ ओनली 2 or 3 आर नेसेसरी. तो वो जो एक्स्ट्रा जा रही है ना बेटा, इट विल सप्रेस योर नॉर्मल फ्लोरा. ओके मैम, नॉर्मल फ्लोरा एक बॉडी का पार्ट है ना जो परमानेंटली वहां पे रेजिडेंट है. तो फिर वो ड्रग के लिए दोबारा उसके लिए एज एंटीजन वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है. नो बेटा,
देखो नॉर्मल फ्लोरा वहां पे तो प्रेजेंट है, लेकिन जब भी आपको एंटीबायोटिक दोगे, देखो मैंने आपको ये कहा है कि नॉर्मल फ्लोरा हम कहते किसे हैं, वो बैक्टीरिया जो कि वहां पे परमानेंट रेजिडेंट हैं, लेकिन वो Yes, अगर ma'am. किसी और साइट पे जाएंगे तो देन दे विल बी पैथोजेनिक। Yes. ठीक है, एंटीबायोटिक्स तो ये नहीं देख रही है कि ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है या नहीं है, वो तो किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करेंगी। Okay. ठीक है, एंटीबायोटिक्स Yes, को तो ये नहीं पता कि ये हमारी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है और हमने इसको खत्म नहीं करना, वो तो जब आप देंगे तो वो सारा का सारा नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस करेंगी। Okay, ma'am. खास तौर पे जीआई ट्रैक का, जब हम ओरली देंगे तो आपका जीआई ट्रैक का तो ओरल फ्लोरा सप्रेस करेंगी ना। Yes, sir. उनको तो ये नहीं पता कि यहाँ पे रहते हैं, एंटीबायोटिक्स आर अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हम द वर्ड यू व्हेन वी यूज एंटीबायोटिक्स दे आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया or that are used to kill or suppress the growth of the bacteria, right? Yes. Okay. Yes. So antibiotics don't know that this is the normal flora and we don't have to kill it. It will kill all those organisms irrespectively, right? Yes, ma'am. So it will cause the pseudomembranous colitis, which will present as the yellow plaques on the damaged epithelium, and patient will present with diarrhea, abdominal pain, and this is due to the irrational use of the antibiotics. So some of the intestinal bacteria also produces several vitamins like vitamin B and vitamin K, and the poorly nourished people who are treated with oral antibiotics can have vitamin deficiencies as a result of the reduction in the normal flora. So normal flora not only protects you, they are also the normal flora of GI tract are also responsible for producing certain vitamins like vitamin B and vitamin K. And in the poorly nourished people who are treated with the oral antibiotics, I am talking about the oral antibiotics most importantly, because oral antibiotics will suppress the normal flora of the GI tract. When we will use the oral antibiotics, it will suppress the normal flora of your GI tract, which is responsible for producing the several vitamins like vitamin B and vitamin K. So when the normal flora will be suppressed, there will be decreased production of the certain vitamins like vitamin B and vitamin K. Now we will move on to the normal flora of our skin. यहाँ तक बात clear है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What is the normal flora of skin? The predominant organism of the skin is Staphylococcus epidermidis. I am using this term again and again, which is a non-pathogen on the skin, but it can cause disease when it reaches certain sites like artificial heart valves. It will cause endocarditis, and in the prostatic joints. The anaerobic organisms such as Propionibacterium and Peptococcus are situated in the deeper follicles in the dermis where the oxygen tension is low. Okay. Some they are beta Staphylococcus epidermidis is the part of the normal flora of your skin, and it is non-pathogenic only at that site, and it is present on the epidermis. But in the deeper follicles, there will be anaerobic organisms. Anaerobic organisms क्या होते हैं? What are anaerobic organisms? Do you have any idea? They do not require oxygen for That require oxygen. That don't require oxygen for this. oxygen. That will grow in the absence of oxygen, right? So anaerobic organisms will be present in the deeper follicles or in the dermis where the oxygen tension is low, right? Yes. Propionibacterium acnes is the common skin anaerobe that is implicated in the pathogenesis of acne. So we talked about the bacteria, the normal flora of the skin. The bacteria, the normal flora of skin is Staphylococcus epidermidis and certain anaerobes. Now we will talk about the fungi.
which is also a part of the normal flora of the skin. The yeast, the Candida albicans, is also a member of the normal flora of the skin. Whenever we talk, we use the term yeast or molds, we are referring to fungi. Okay? Whenever we use the term yeast and mold, we are referring to fungi. The yeast Candida albicans is also a member of the normal flora of skin. It can enter the person's bloodstream when needles pierce the skin. For example, in patients with intravenous catheters or in those who use intravenous drugs. So it is a part of the normal flora, but when a person the person has will pierce the skin, or when the needle pierces the skin, the patient with the patients with intravenous catheters, intravenous catheters क्या होते हैं? Do you have any idea? हम जो वेन के थ्रू आगे भेजे जाएंगे कैथेटर्स जो होते हैं balloon shape It's also an intravenous catheter. Branlas लगते हैं ना? Hospitalized patients को intravenous catheters. Ma'am, cannulas? Yes. आप सब बच्चों कभी किसी को ड्रिप लगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैनला लगता है ना? Yes, ma'am. It is an intravenous catheter. Okay. There are certain types of intravenous catheters. Yes, ma'am. So Brenla is also a part of is also an example of the intravenous catheter. मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ आपको कि whenever a person like the hospitalized patients are mostly on the intravenous catheters, or so when the needle pierces the skin, the normal flora can enter the bloodstream. Okay, skin के ऊपर present है ना? Whenever the needle pierces the skin, the normal flora will gain entry into the skin. In the patients with intravenous catheters or in the intravenous drug abusers. Intravenous drug abusers का तो पता है ना आपको? Yes. Yes, ma'am. The normal flora will gain entry. Most important, the Candida albicans. It is an important cause of the systemic infections in patients with reduced cell-mediated immunity. जिन लोगों की immunity कम होगी, बहुत hospitalized patients होंगे, immunocompromised होंगे, खुदा ना खास्ता HIV है उनको, diabetes है, they are immunocompromised patients. So it is an important cause of systemic infections in patients with reduced cell-mediated immunity. Now we will talk about the normal flora of the respiratory tract. First of all, we have to recall the normal flora of the skin. Shabash, मुझे बच्चों बताओ, what is the part of the normal flora of skin? Staphylococcus epidermidis. Shabash. Anaerobe. Epidermidis. Very good. And in the deeper follicles, we have anaerobic area, right? Or in nose, Streptococcus aureus. And name the fungi that is an important part of the normal flora of skin as well. And albicans. Okay. So skin and the important organisms are Staphylococcus epidermidis, sometimes Staph aureus as well, anaerobes and Candida. They are the part of the normal flora of skin. Now we will move to the normal flora of the respiratory tract. The nose is colonized by variety of Staphylococcus and Streptococcal and Staphylococcus species, the most significant of which is the pathogen Staphylococcus aureus. Acha beta, we will talk in detail in the special bacteriology what are Streptococcus and what are Staphylococcus. ठीक है, ये दो different organisms है. But the most significant organism is Staphylococcus aureus, which is present in your nose. The throat contains a mixture of virid and streptococci like the Neisseria species and the Staphylococcus epidermidis. These non-pathogens occupy attachment sites on the pharyngeal mucosa and inhibit the growth of the pathogens like the Streptococcus pyogenes, which is a very important organism which is responsible for causing the 90% cases of the strep throat or the sore throat, and the Neisseria meningitis and the Staphylococcus aureus respectively. So the most important organism that is a part of the normal flora of your nose is Staphylococcus aureus.
In the throat, we have the mixture of viridin streptococci, Neisseria, and Staphylococcus epidermidis, right? Yes, ma'am. So how they will protect you? They will occupy the attachment sites on the pharyngeal mucosa and inhibit the growth of the pathogens, as I told you before. What is Streptococcus mutans? Why it is important? We are talking about it because we are talking about the oropharynx. A member of the viridans group found the large number in the dental plaque and the precursors of the caries. The viridin streptococci leading and it is the leading cause of subacute bacterial infective endocarditis as well. These organisms can enter the bloodstream at the time of the dental surgery and attach to the damaged heart valves. Okay, so Streptococcus mutans, which is present in large number in the dental plaques and is responsible for the caries. It is present in the dental plaque. Whenever a person will have a dental surgery and the person is immunocompromised, then this organism, which is a part of the normal flora of the oropharynx, and it is present in the dental plaque, it will enter the bloodstream and it will damage the heart valves. Okay. Yes, ma'am. Now we will move on to the normal flora of the GI tract. The normal flora of GI tract is in the stomach, we have the lactobacillus, which is very important. In the small intestine, we have Enterococcus, lactobacillus. Then the large intestine, we will have lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus bacteroides, Clostridium, Staphylococcus eubacterium, and coliforms. This is a picture. In your books, you will have the tables. Okay. And you will remember. ये बेटा आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों को ग्रास्प ही करना है या आप लोगों को याद ही करने हैं नाम, ठीक है? इसमें अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, लेकिन आपको ये याद करने हैं. तो स्टमक मैंने आपको बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इज द लैक्टोबैसिलस or the lactobacilli. Bacilli is a word used for more than one organism. Actually we use the word bacilli for the rods, but abhi aapko nahi pata. So lactobacillus means one organism, lactobacilli means more than one. Okay. Streptococci, lactobacilli are the part of the normal flora of the small intestine, and then a list of organisms that are present in the large intestine as a part of the normal flora. Enterobacterium, Enterococcus faecalis, Bacteroides, Peptococcus, coliforms, and Clostridium. So what is the part of what is the normal flora of the gastrointestinal tract, which is also responsible for producing certain vitamins like the vitamin B and vitamin K. Primarily the आपको बेटा मैंने बताया था कि जीआई ट्रैक में आपके होते हैं सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि सर्टेन जो आपका पार्ट है नॉर्मल फ्लोरा का, दे आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द सर्टेन विटामिन्स लाइक विटामिन बी एंड विटामिन के. सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द vitamin B and vitamin K. So now we are moving to the normal flora of the genitourinary tract. Genitourinary tract में बेटा सबसे important organism है lactobacilli. Lactobacillus is very important, and you will have a question that why lactobacillus is important and what is the role of lactobacillus. Lactobacilli are part of the normal flora of the vagina, and they are responsible for producing the acid that keeps the pH of the adult woman's vagina low. Whenever there will be low pH, then जब acidic pH होगी बेटा, जब low pH होगी तो वहां पे organism या pathogenic organisms grow नहीं करेंगे, ठीक है? And it keeps the pH of the adult woman's vagina low. Before puberty and after menopause, when the estrogen levels are low, lactobacilli are rare and the vaginal pH is high. So why this is important in the after puberty? Because in the menstruating woman, they keep the pH of the vagina low so that during every menstrual cycle, they protect the woman's vagina from the pathogenic organisms.
They prevent the growth of the potential pathogens since their suppression by the antibiotics can lead to the overgrowth of the Candida albicans. So they prevent the growth of the potential pathogens, but when we use extensive antibiotics, they can lead to the overgrowth of the Candida albicans and the woman can have the vaginal thrush. The overgrowth of this yeast can result in the Candida with vaginitis. Vaginitis is an inflammation of the vagina, and whenever we use the itis word, we are referring to an inflammation. So this is the last slide we have for this lecture, for this topic. And this is the summary as well. That did you know that there are more microscopic bugs living on our body than there are people on the earth? We don't know even at how many organisms are present or how many organisms are residing on our body. That's why whenever we are talking about the antibacterial hand wash, जब भी आप कभी antibacterial hand wash use करते हैं तो थोड़ा अब इस कोविड के सिनेरियो में तो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन अगर हम नॉर्मली इससे पहले अगर हम देखते थे तो एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश को हम बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे बिकॉज दिस सप्रेस द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ योर स्किन. इसी वजह से बहुत सी ड्राइनेस आप देखते हो जब आप एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश यूज करते हो तो आप देखते हो ना बहुत ड्राई हो गए आपके हाथ बिकॉज दे ऑल्सो सप्रेस द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ योर स्किन. नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन क्या है कि वी आर नॉट बैड बैक्टीरिया. नॉर्मल फ्लोरा क्या है? यही कहते हैं वी आर नॉट बैड, वी आर गुड फॉर यू. But in their normal anatomic sites, whenever they will be present in the other side, they can be pathogenic. ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया Staph aureus है, it is a part of the normal flora of your nose, but it can lead to many infections, skin infections. It is a very important cause of the pyogenic infections. Pyogenic means pus. Pyo means pus. It is responsible for causing many diseases, toxic shock syndrome. We can talk about scarlet fever. So there are many. We will discuss later. So they are only innocent in those areas where they are normally present, or when where they are the residents. They are only innocent in those areas. इतने मासूम नहीं है ये सिर्फ उन जगहों पे मासूम है जिन जगहों पे ये रहते हैं. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will move to our next topic. Excuse me. I will give you a brief introduction about the growth of the bacteria, how the bacteria will grow. हम इसको डिटेल जो है वो हम इसकी कल डिस्कस कर लेंगे, but I just want to have you an idea. Bacteria reproduce by binary fission. In binary fission, the one parent cell divides to form two progeny cells. You can have an idea from this picture. This is binary fission. This parent cell divides to form two daughter cells. Okay? Yes. This is called the binary fission, when one parent cell divides to form two progeny cells. As one cell gives rise to two progeny cells, bacteria are called to undergo exponential growth. What is exponential growth? One parent cell will divide into power. That's some power. 2 की power से divide into 4. 4 will divide into 8, and 8 will divide into 16. 16. Very good. One bacterium will produce 16 bacteria after 4 generations. ठीक है ना? Yes. What is the doubling time? What is the doubling time of the bacteria? क्या समझ आती है doubling time से? Ma'am, वो binary one binary
when a bacteria doubles its generation. Okay, when a bacteria, certain bacteria doubles its generation, and the time is called the doubling time. The time required for one bacteria to double its generation. It is different for each and every organism. It is different for each and every bacteria. कुछ bacteria का doubling time बहुत ज्यादा होता है, कुछ का बहुत कम होता है, right? The time required for one bacteria to double its population. It is 20 minutes for E. coli. It is more than 24 hours for Mycobacterium tuberculosis. Okay, so आपको इससे क्या समझ लगती है? 20 minutes for Escherichia coli and 24 hours for Mycobacterium tuberculosis. इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी ग्रोथ बहुत रैपिड होगी? E. coli. E. coli. Very good. E. coli organism, one E. coli organism will produce over 1,000 progeny in about 3 hours and over 1 million in about 7 hours. Yes, beta. मैम ऐसा क्यों है जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो सबसे छोटा है बैक्टीरिया? तो no, it depends on the species. It depends on the amount of nutrient each and every bacteria required. कुछ bacteria की requirement different है nutrients की. कुछ bacteria certain temperature पे grow करते हैं और certain temperature पे grow नहीं करते. They need, and there are certain factors like each species has different requirements, like the temperature, like pH. Some bacteria will grow in the acidic pH, some bacteria will grow in the alkaline pH. अब जैसे आपका GI tract है, उसमें अगर आप देखें जो normal flora है आपका, वो acidic environment में grow कर सकता है, लेकिन बाकी organisms उस environment में grow नहीं करते. So it differs with each and every species. The amount of nutrient it requires, the temperature, the pH, and the other environmental factors play a very important role. This will never be same for any organism, for all the organisms. Each and every organism has different requirements for their growth, right? yes. There are bacteria that grow in the cold environment. There are certain bacteria that मैम डबलिंग टाइम में सारे बैक्टीरिया जो वो एक दफा बाइंडिंग मिशन करेंगे अपनी की उसकी होती रहेगी? बेटा फॉर एग्जांपल अगर 4 बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और उनका डबलिंग टाइम डिफरेंट होगा, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैम डबलिंग टाइम है ना जनरेशन का, मतलब सारे बैक्टीरिया जो ई कोलाई लाइक 20 मिनट्स में इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू अनदर. एक टाइम पे एक सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, उस टाइम पे दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी. लेकिन होता ये है कि मोस्टली जो डबलिंग टाइम एक ऑर्गेनिज्म का होता है, आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो इक्वल अपनी जनरेशन को डबल कर लेता है. मैं आपको अभी भी ये बात कह रही हूं, इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स. अगर वो फैक्टर्स, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, टेम्परेचर एडिक्वेट नहीं है, पीएच उसके अकॉर्डिंग, उस ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है, तो चीजें डिफर करेंगी. समझ आई? यस मैम. yes. दिस इज द ग्रोथ कर्व ऑफ द बैक्टीरिया. ये आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है. ये जो पार्ट ए है, इट रेफर्स टू द लैग फेज. Part B refers to log phase, C is stationary, and D is decline. Right? A is lag phase, B is log phase, C is stationary, D is decline. What is lag phase? And the lag phase, the vigorous metabolic activity occurs, but cells don't divide. This can last for a few minutes to many hours. मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बट इस टाइम पे सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे. द सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग इन दिस फेज. इट कैन लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू मेनी आवर्स. दिस ए इज द लैग फेज. देयर इज विगरस मेटाबॉलिक एक्टिविटी बट सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, राइट?
Now comes the B part or the log phase in which there will be rapid cell division. सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, रैपिड सेल डिवीजन होगी इन द लॉग फेज. किसमें? Log phase. Log phase में. And the beta lactam and the lactam drugs such as the penicillins act during this phase because the drugs are effective when the cells are making peptidoglycan when they are dividing. बेटा जब हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगी मोस्टली जो लैक्टम ड्रग्स होते हैं ना, जो पेनिसिलिन्स हैं, दे विल एक्ट ऑन दिस फेज बिकॉज जिस टाइम पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे उनकी सेल वॉल बन रही है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन सेल लेयर है, तो इस टाइम पे वो एक्ट करती हैं. ठीक है, जब लैक्टेम वर्ड का क्या मीनिंग होगा? लैक्टेम ड्रग्स क्या मतलब? बीटा लैक्टम ड्रग्स होते हैं बेटा जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है. ये आप पढ़ोगे अभी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, आपका चैप्टर है आगे. ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा. लैक्टम ड्रग्स हैज द बीटा लैक्टम रिंग इन द स्ट्रक्चर. आप कह सकते हो कि पेनिसिलिन्स. ठीक है, दे आर मोस्टली इफेक्टिव इन दिस पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ बिकॉज दे विल एक्ट ऑन इन दिस फेज बिकॉज जिस टाइम पे सेल डिवाइड हो रहा होता है उस टाइम पे ही सेल वॉल बन रही होती है, उस टाइम ही पेप्टिडोग्लाइकन बन रही है. सेल वॉल में क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन सेल लेयर है ना. यस यस इस टाइम पे वो एक्ट करेंगे. एक्चुअली दे विल, वो क्या करते हैं? दे आर सेल वॉल इनहिबिटर्स. सो दे विल इनहिबिट द पेप्टिडोग्लाइकन सेल लेयर सिंथेसिस. So they will act on this phase because when the cell divide there will be cell wall production and these penicillins are the cell wall inhibitors, so they will act on this phase, right? Okay. अभी आप इतना याद रखो, there is a lag phase in which there is vigorous metabolic activity but there will be no cell division. Then comes the log phase in which there will be rapid cell division, right? Then comes the stationary phase. अब न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा किसी जो है वो यूज करना शुरू कर दिए बैक्टीरियाज ने. जब बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है? न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं. व्हेन देयर विल बी न्यूट्रिएंट डिप्लीशन और द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कॉज द ग्रोथ टू स्लो until the number of the new cells produced balances the number of the cells that are dying, result in the steady state. ये आप देख रहे हो, this C is a stationary phase. इस फेज में जितने बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट आर डिवाइडिंग इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट आर डाइंग एट दैट टाइम. दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज, राइट? Yes, ma'am. Then comes the decline phase. It is marked by a decline in the number of the bacteria. इसमें क्या है बेटा? डिवीजन बहुत कम हो गई है और now there is a phase when there will be death of bacteria. So D for decline or the death. Okay? अभी फिर देख लो. A is Lag phase. lag in which there is vigorous metabolic activity but no cell. And no cell division. B is log phase. Rapid cell division. C is Stationary phase. The number of bacteria that are dividing equals to number of bacteria that are dying. And then comes the decline or the death. Okay? This growth curve is very easy and very important as well. Okay? Very easy, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aerobic and anaerobic growth जो है we will हम कल करेंगे, ठीक है? We will discuss it tomorrow. Do you have any questions? No, ma'am. मैम जो हमने पीछे बात की थी कि जब हम कोई एंटीबायोटिक देंगे तो वो आके हमारे फ्लोरास को मतलब डिस्ट्रॉय करेगी, उसके ऊपर भी एक्ट करेगी, तो हमें सिम्टम्स जो होंगे तो उसको भी रिकवर करने के लिए दोबारा हम मेडिसिन देंगे ना? But it depends. It depends. इसलिए हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. और आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है, जो हम आगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बाद पढ़ेंगे. Yes. ठीक है? Yes. That's why we always say that the use of antibiotics should be precise, should be very careful. Because in हम healthy individuals की तो बात different है ना. जो बच्चों होते हैं ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, उनको जहन में जरूर रखना चाहिए. हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को जरूर रखना चाहिए. ठीक है?
So there will be Thank you, ma'am. the rational use of the antibiotics should be discouraged. They should be precise. They should be careful use of the antibiotics. Okay. Do you have any questions? No, ma'am. No, Thank you. ma'am. समझ आ गई है fauna flora की growth curve की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any questions, you can ask. You can even ask in your WhatsApp group as well. But make sure कि जब हम एक लेक्चर जो है वो खत्म करें, जब हम उसे वाइंड अप करें, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो. You can ask as many times as you can. Okay? Yes, We are here to answer you. We are here to answer all your queries, and inshallah ta'ala, you will find us very accommodating. Inshallah. Okay, beta. Thank you so much. Thank you.